न्यू रजीम फाइनेंस मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है। 2/3 टैक्स पेयर्स अब न्यू रजीम में आ चुके हैं, हम सब जानते हैं। ओल्ड रजीम को थोड़ा सा सौतेला सा बना दिया गया, उस पर अब छेड़खानी नहीं होती, शायद वो जाने वाली है अभी या आने वाले कुछ सालों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यू रजीम को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 8-9 करोड़ के आसपास हैं। जो इसमें से लोग असल में टैक्स देते हैं वो 2-3 करोड़ के बीच में है। तो वो 2-3 करोड़ 20-22 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कराते हैं। मैंने उनको VIPs कहा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर ब्लू आइड पीपल, यू नो। उनको उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से बार बार टैक्स लें, उन्हीं लोगों से और ज़्यादा टैक्स लें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मैं नीलेश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी मछलियाँ बाहर घूम रही हैं, उनके लिए नेट बिछाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे बड़े किसान हैं, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, शायद उसको ना ही छेड़ा जाए, पर ऐसा मेरा मानना है कि जो बहुत बड़े किसान हैं उनके ऊपर अब इट्स हाई टाइम कि आप एग्रीकल्चर टैक्स टॉप लेवल के किसानों पर भी लगाएं। और बहुत सारे लोग बाहर टैक्स नेट से उनको टैक्स में लाएं। न्यू रजीम की बात करें तो अनुज, मुझे लगता है कि स्लैब 3 लाख से शुरू होता है। 3 की बजाय 5 लाख करा जाना बहुत रैशनल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये सच है कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स 10 लाख से नीचे के हैं, तो उससे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में उतना फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का फर्क पड़ जाता है। और उसके अलावा सैलरी वाले ज़्यादा मार खाते हैं, सैलरी वालों से ज़्यादा टैक्स भी आता है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दी थी न्यू रजीम में, वो 1 लाख करना उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर कर दी जाए। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी जब घुस रहे थे अपना पार्लियामेंट सेशन का कुछ इनिशियल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास पे महालक्ष्मी की कृपा रहे। तो मुझे लगता है महालक्ष्मी की कृपा यही हो सकती है कि उनको कुछ टैक्स में रिलीफ आना चाहिए। इसके अलावा अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी मुझे लगता है अनुज के चेंज हो गई है। अब पहले 5-6 लाख को मिडिल क्लास देखा जाता था, अब 15 लाख तक आप आराम से मिडिल क्लास ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूं, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 15 लाख के बाद आप 30% लगाना शुरू कर देते हैं। इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि 30% आप 15 लाख से लगाते हैं। और उसके अलावा आप 7-7.5 लाख तक एक 87A की रिबेट होती है 25,000 रुपए की, वो भी अब बढ़ा के 10 लाख तक कर देनी चाहिए। तो न्यू रजीम अगर दिल के करीब है वित्त मंत्री के, तो मुझे लग रहा है उस न्यू रजीम में ही उसको और लुभावना बनाया जाए। इससे और ज्यादा लोग न्यू रजीम में आएंगे और आपकी जो ओल्ड रजीम है वो रिडंडेंट होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होती जाएगी, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे पिछली बजट में, मैं अनाउंसमेंट सुनी थी, आप ही के चैनल पे था, और मुझे लगता है उसकी भी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है कि एक बहुत सिंप्लीफाइड, आसान, सेल्फ कंप्लाइंट, आप खुद ही पढ़ के और आसानी से टैक्स दे सकते हैं। आपको बार बार टैक्स एक्सपर्ट्स के पास ना जाना पड़े, कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप जाइए, वरना आप ना जाइए। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आज कुछ सुनने को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा। कम से कम उसके ट्रेसेस अनुज जरूर इसमें आने चाहिए। बिल्कुल, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन है। वैसे 75,000 से 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बढ़ भी गया तो 25,000 रुपये पर आप टैक्स सब बचाएंगे, 7,500 रुपये साल का, मतलब 5,600 महीने का। क्या करेंगे इस धनराशि का। लेकिन एक चीज़ बताऊं, शरद जी ने कही कि 15 लाख वाले मिडिल क्लास में, मुझे तो फिर आज भी ना फीलिंग मिडिल क्लास की होती है। वैसे मतलब फ्रैंकली जो 10-15 साल पहले फीलिंग थी ना, वही आज भी फीलिंग होती है। खैर, एक बार नीलेश भाई के पास चलते हैं और जानते हैं कि और यहाँ से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अब इस समय थोड़े से पंख लगे, खासतौर से मिड कैप्स में। नीलेश भाई, पिछला 1 महीना 2 महीना ब्रॉडर मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा, और मुझे बार बार जब मैं बात करता हूँ मुझे वो आपका वो कर्व याद आता है जो आपने मार्केट के लिए कहा था कि कर्व ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे हो गया था। तो अब पिछले 2 महीने में क्लियरली उसमें बहुत ब्रूटल सेल ऑफ आया। क्या इस बजट के बाद वो सेल ऑफ वापस रिज्यूम होगा, या अब वो जो जितने एक्सेसेस निकलने थे वो निकल चुके हैं? अनुज भाई, मुझे लगता है कि इस बजट में अगर हम फॉरेन निवेशकों को विश्वास दिला पाए कि हमारी ग्रोथ बाकी देशों के सामने अच्छी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, और उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, तो होपफुली उन्होंने जो बेचा है उसके ऊपर वो शायद सोचेंगे। आज की तारीख में अनुज भाई हम देख रहे हैं जो बिकवाली भारत में हो रही है वो एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास में हो रही है। यूएस मार्केट ने इतना अच्छा किया है पिछले 15 सालों में कि लोग इमर्जिंग मार्केट बेच के यूएस में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से भी थोड़ा उस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। तो हमें इमर्जिंग मार्केट से अलग होना है, लोगों को ये कन्विंस करना है कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट एक तरफ और भारत एक तरफ। अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट बजट और क्रेडिट पॉलिसी ये दोनों से हम इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे।
मार्केट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बॉटम आउट हो जाएगा अगर बजट और क्रेडिट पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड रही तो। अच्छी बात आपने कही। और नीलेश जी और सौरभ, क्योंकि आप दोनों सेल साइड पर रहे हैं और काफ़ी एफआईएस के साथ आपका एक समय था जिसमें काफ़ी इंटरेक्शन होता था, क्या तंग कर रहा है एफआईएस को? मैं दोनों से आपसे व्यू जानना चाहूँगा। नीलेश, पहले आप बता दीजिए क्या एफआईएस को तंग कर रहा है और क्या बदल सकता है? तो जो तीन रीजंस जो मेरे ध्यान में आती है, पहली बात तो ये है कि जैसे नीलेश ने बताया कि जो एक होम मार्केट ज़्यादा अच्छी कर रही है, खास करके पिछले एक साल में। तो अगर होम मार्केट ही अगर अच्छी कर रही है तो आपको देश के बाहर कहाँ जाना है? मतलब यही बात होगी कि आप इंडियन इन्वेस्टर और इंडिया मार्केट इतनी अच्छी करे तो आपको जाके नाइजीरिया में क्यों इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल मतलब उस तरह का जो अगर सिंप्लीफाई बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस, मतलब जो हिस्टोरिकल एवरेज जो था उसके कंपैरिजन में हम प्रीमियम पे चल रहे थे। जो पिछले 3-4 महीने के करेक्शन है उसमें वो प्रीमियम चला गया है, तो हम अभी थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एवरेजेस के लाइन में है। तीसरी बात, जो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है, और मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ऐसा वो उनका कहना है कि बड़ी मार्केट्स में एज अ फॉरेनर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, या शायद एक बहुत यूनिक मार्केट है जहाँ पे शायद आपको एक फॉरेनर की हैसियत से आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो अभी तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक आपका ग्रोथ सुपीरियर था, आपके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे और रिटर्न्स आ रहे थे मार्केट में। जैसे ही आपकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, वैल्यूएशंस रिलेटिवली हायर है और अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये जो सारी बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक इरिटेंट बन के आ जाती है, और ये एक वजह बन जाती है उनके लिए कि हम इसलिए निवेश नहीं करना चाहते या इसलिए हम लोग बेच रहे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये तीनों रीजंस है जो कभी भी इंटरेक्शंस होता है तो ये तीनों रीजंस उभर के आते हैं। सौरभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर क्या बदले तो एफआईआई वापस आए भारत में? आई थिंक टू बी फेयर, सिर्फ एफआईआई को नहीं, डोमेस्टिक निवेशक को भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर देखें जिस प्रकार का अर्निंग स्लो डाउन दिखाया लास्ट 5 क्वार्टर में, राइट, ये सबसे तगड़ा अर्निंग स्लो डाउन है मेरे करियर का। अगर हम लीमन ब्रदर्स, ग्रेट जीएफसी को और कोविड को एक्सक्लूड कर दें, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि 30% ईपीएस ग्रोथ निफ्टी का 5% बन जाता है 5 क्वार्टर में। तो ये तगड़ा स्लो डाउन है अर्निंग्स में। मेरे ख्याल से उतने फटाफट ही अर्निंग स्लो डाउन जाएगा नहीं, और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको मद्देनज़र रखते हुए, इस अर्निंग स्लो डाउन को, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तो वैल्यूएशन है इंडिया में अनसस्टेनेबल है। तो जब तक मार्केट और सस्ता नहीं हो जाता, वो विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक निवेशक हो, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरमीत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्योंकि सबसे बड़ी दुखती रग मार्केट की यही रही है। रोज़ मतलब कि कई बार हम कहते हैं ना और कितना ही बेचेंगे, तो एक बार किसी ने मुझे भेज दिया था कि ये चैलेंज नहीं है, ये मतलब जनरली पूछ रहे थे, क्योंकि हमने जब बोला ना कितना और बेच सकते हैं, वो और 7,000 करोड़ अगले दिन बेच देते हैं। वो किश्त बन गई थी एक रोज की। अनुज, एक थोड़ा सा एरोगेंस भी था, हम बीच में बोलने लगे थे हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। और आप देखिए 5,000 करोड़ का ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लग गया है। वही तो 5,000 करोड़ का एक फिक्स कोटा लेके आते हैं कि इतना ही बेचना है। तो जो नीलेश ने बात बोली, पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न निफ्टी का 10 ईयर यूएस बॉन्ड से ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉन्ड से? हाँ, तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 5% यील्ड देगा, मार्क टू मार्केट गेन देगा थोड़ा बहुत, तो आप 7-8% डॉलर टर्म में एक इजी ट्रेड बना सकते हैं अभी इस लेवल पे। 4.5% का यील्ड है, और आपका भी जो पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न है, तो हमने वो 10 को 12.5 करके, मुझे लगता है हम कई बार ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं। बिल्कुल। फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है, रिस्क कैपिटल जा रहा है, और हम पंजाबी में बोलते हैं मन नीवा मत ऊंची। हम थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, फॉरेन कैपिटल चाहिए हमें, हमारी डिपेंडेंस कम हुई है, ये अच्छी बात है। ये बोलना कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इमर्जिंग मार्केट है, हमें तो रिस्क कैपिटल को इज्जत देनी चाहिए। बट मैं सौरभ की बात से एग्री करता हूँ, स्लो डाउन है और ग्रोथ को रिवाइव करना चाहिए। अगर 8% ग्रोथ इंडिया अचीव नहीं कर रहा है तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ अगर हम 8% ग्रोथ नहीं करेंगे और 11-12% नॉमिनल नहीं करेंगे, तो वो बाकी सब स्लोगन्स हैं कि हम विकसित बनेंगे या ये बनेंगे। तो मुझे लगता है ग्रोथ फोकस होना चाहिए, और ये रेटिंग एजेंसीज को प्लीज़ करने का जो हम कोशिश कर रहे हैं 10-15 साल से, उन्होंने नहीं प्लीज़ होना। तो आप अपना ग्रोथ चार्ट करिए, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो थ्रू करेंगी, ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा नीलेश भाई, ये पासिंग जो अर्निंग सीजन था वो बैंकों के लिए वो कैसा लगा आपको? आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की जो स्थिति काफ़ी ड्राई हो गई थी उसको कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है, बट पासिंग नंबर्स कैसे लगे आपको इस बार के बैंकों के? बैंकों में कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। जो मीठा है वो ये है कि उनके मार्जिन उतने करेक्ट नहीं हुए जितनी लोगों की अंदेशा था, एंड अब लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो जाहिर है जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ
एकदम लो डबल डिजिट में है, वो थोड़ा वहां से इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज है कि होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग में एनपीए अभी भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं, एंड वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट डीलिवरेजिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को एनपीए में दिख रहा है। जो कुछ खट्टा है वह है माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बढ़ते हुए एनपीए, और जो बैंक के क्रेडिट कल्चर खराब है, जहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बड़ी ज्यादा है, उनके मार्जिन के ऊपर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट होती दिखी है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें वैल्यूएशन में आती है। तो कुछ बैंक है जो पिछले 3 या 5 सालों से वैल्यूएशन में डी रेट होते हुए ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पे निवेश करने के लिए योग्य बनते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा लगता है कि निवेश करने का समय आ गया है, वैल्यूएशन आपकी फेवर में है, और आप बॉटम अप जिस कंपनीज में अनसिक्योर्ड लेंडिंग की रिस्क कम है वहां पे देख सकते हैं। जब एनबीएफसी का नाम आता है ना अनुज, तो गुरमीत ने मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। पत्नी का मैसेज आया ना, फोन आया ना, बजाज फाइनेंस का फोन जरूर आता है सबसे पहले, है ना। ये B2 पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मैंने बोला था कि सुबह अलार्म की तरह 7 बजे फोन करिए, फोन जरूर आएगा सबसे पहले। नहीं, मुझे भी आता है बजाज फाइनेंस का फोन, उस बार गुरमीत याद आता है उस वक्त। तो कोई याद करे ना करे, वो लोग ज़रूर याद करते हैं। और मुझे अनुज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे किसी ने बोला था कि कुछ हद तक शायद इंटेंशनल भी था थोड़ा ना, ये जो ओवर हीटिंग थी, बहुत सारा पैसा, जो आपने लेवरेज की बात करी सुशील जी से, बहुत सारा पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन स्टॉक मार्केट की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा था। एफएनओ में भी लॉसेज हुए हैं। तो कुछ रेगुलेटर मुझे लगता है कॉन्शियसली भी स्लो कर रहा था अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, बट मुझे लगता है वो कई बार माइक्रो मैनेजमेंट में आप दोनों तरफ एक्सेस हो जाता है। जो उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं, आई डोंट थिंक 7 बजे आप दोनों में से किसी का भी फ़ोन सुनना चाहते हैं। खैर एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट का एक बार रुक करते हैं। और थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि बाजार रिंग उतरने वाला है अनुज, है ना। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल 6 मिनट बचे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी और बजट पेश करेंगी। वैसे एक चीज़ है, बाजार थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। पहले मतलब यही बाजार पिछले मंडे को क्या था और अब क्या है, मंडे को हम 22,800 पर थे निफ्टी पर, अब हम 23,600 पर हैं। तो करीब करीब 800 पॉइंट की अब हमने रैली देखी है वहाँ से। और मिड कैप देखिए क्या एकदम जो कंप्लीट कोलैप्स हो चुका था मिड कैप इंडेक्स, वहाँ पर एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं। शरद जी, काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या कुछ एक्साइज टिंकरिंग होगी पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि एक जब क्रूड ने बढ़ना शुरू किया था तब एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो उससे पहले एक्साइज बढ़ाई गई थी वो शायद एट सम स्टेज कट की जाएंगी, क्योंकि कभी लोअर क्रूड का फ़ायदा तो मिला ही नहीं एक आम इंसान को। लेकिन उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो महंगा तेल फिर भी खरीदना पड़ा। कुछ उसमें स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है अनुज, क्योंकि जिस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है फ्यूल प्राइसेस का ओवरऑल इन्फ्लेशन पर, और आपको पता है कंजम्पशन नीचे जाने का मेन रीज़न या टॉप रीज़न में से एक रीज़न इन्फ्लेशन है कि लोगों को हाथ में बच नहीं रहा तो और सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी बचत नहीं हो पा रही है। तो सरकार के पास मौका है, बिल्कुल एक्साइज टिंकरिंग ओवर ड्यू है, होनी चाहिए। अगर फ्यूल प्राइसेस, अब क्रूड हम देख रहे हैं कि $80 से नीचे अक्सर रहता है, कभी कभार होता है 80 से ऊपर जाता है, और OMCs का प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, OMCs की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार को करना चाहिए। सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, इसको GST में लाने का भी प्रेशर है, पर कम से कम जब तक GST में नहीं आता तो आप एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल करी जा सकती है, और अनाउंसमेंट आएगी तो बहुत स्वागत करने योग्य होगी। और इन्फ्लेशन के लिए लोग पूछते हैं कि भाई बजट में क्या किया जा सकता है, तो उन कदमों में से एक कदम ये हो सकता है कि आप एक्साइज को कम कर दें और पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत दें, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इससे फर्क पड़ेगा। अनुज, बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, क्योंकि GST तो हम जानते हैं GST काउंसिल के अंतर्गत है, यहाँ पर एक पॉलिसी अनाउंसमेंट GST पे तो सुनाई दे सकती है, पर GST आप कहीं महंगा सस्ता कुछ हुआ वो यहाँ पर उम्मीद नहीं होती है। एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करके बैठा भी हूँ, और लोग जनरल आम आदमी भी उम्मीद करके बैठा। और अभी मैं नीचे आपके टैग लाइन पढ़ रहा था कि आम आदमी का बजट होगा, तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है पेट्रोल डीजल से अच्छी और कोई राहत नहीं होगी अगर इन्फ्लेशन को हिट करना है तो। बिल्कुल, ये मोदी साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट होगा, और बजट गरीब और किसानों की उम्मीदों का बजट होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। नीलेश भाई, पिछले बजट में एक चीज़ जो आई थी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी सी
गलत लगी होगी वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि आपका तो खैर एक हमेशा से व्यू रहा है कि हम क्यों गोल्ड इतना इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ी चर्चा चल रही है कि इस बजट में वापस उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे देखेंगे उसे? गोल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आप गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं, और उसके दूसरे कंसर्न से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो लोगों को सोने में निवेश करना और अच्छा लगता है। हमें अपना जो गोल्ड होल्डिंग है उसके बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए। जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको तो टच करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बट बहुत सारा गोल्ड लोगों की तिजोरी में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में पड़ा है जो वाइट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट है, वो हमारी फ्रोजन सेविंग्स है। गोल्ड के दाम बढ़े हैं और भी बढ़ते रहेंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स और अपनी हाउसवाइफ के बीच में एक कंपटीशन चल रही है कौन सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हमारी हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं, एक बार सोना खरीदा तो बेचेंगे नहीं। तो हमें फोकस करना है सेफ डिपॉजिट लॉकर में और तिजोरी में पड़े अनअकाउंटेड गोल्ड को, वह भी काफी बड़ी मात्रा है। कैसे हम उसे इंसेंटिव देके मेन इकोनॉमी का पार्ट बना पाए। सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों की फ्रोजन सेविंग्स लिक्विड हो जाएगी, इकोनॉमी में घूमने लगेगी और ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलेगा। तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके अगर एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ जाए जिससे तिजोरी में पड़ा अनअकाउंटेड सोना पैरेलल इकोनॉमी से मेन लाइन इकोनॉमी में आ जाए तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ग्रोथ के लिए कैपिटल भी अवेलेबल होगा। ओके, इस बीच मार्केट से डे हाई 49,805 निफ्टी बैंक और 23,593 यानी ऑलमोस्ट 23,600, यानी आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से डे हाई पर बजट स्पीच ले जा रहे हैं 10:59। कुछ ही देर में अब संसद की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसका ट्रांसमिशन आपको दिखाया जाएगा और बजट स्पीच कुछ ही देर में। सौरभ, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ बनाना चाहता हूँ। आप मिड कैप्स पे स्पेशली अर्निंग्स के बाद देखने के बाद इस बार आपका कन्विक्शन ये कोई बताया इस बार इस बजट इस अर्निंग्स के बाद? नॉन अर्बन में एक्चुअली उछाल आई है, राइट। अर्बन में जैसे काफ़ी आपके एक्सपर्ट्स ने बोला अर्बन में एक प्रेशर है, बट नॉन अर्बन में उछाल आई है। जिस प्रकार का दबाव 2021-22-23 में था नॉन अर्बन पे, वो काफ़ी हद तक घट चुका है। आप ट्रैक्टर के सेल देखें या जो रूरल फोकस्ड कपड़े बेचने वाले कंपनी हैं उनके नंबर देखें, डबल डिजिट में चल रहा है। सो एक ब्राइट स्पॉट है हमारे इकोनॉमी में, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, बट नॉन अर्बन। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1, ध्यान रखिएगा, बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारामन जी का 8वां बजट पेश होने जा रहा है। चलिए चलते हैं फिर सीधा पार्लियामेंट। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget
our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5.
facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks 2nd largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone
and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal.
In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls
in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skill certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support.
social security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up.
At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithila